Student, see question. A medicine capsule is in shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. So student, इसकी figure देखते हैं. This figure will consist one cylinder and two hemisphere at both corners. Now हेमिस्फेयर को देखिए स्टूडेंट, इसका डायमीटर कितना है 5 mm का है, तो इसका रेडियस कितना होगा 5/2 mm. एंड अगेन सिलेंडर को अगर हम देखें तो सिलेंडर का भी रेडियस 5/2 mm होगा, बट इसकी लेंथ स्टूडेंट क्या होगी 14 टोटल है. 14 में से आप 5/2 दोनों कॉर्नर का माइनस कीजिए. सो 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2 दैट इज 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 mm. ये लेंथ ऑफ सिलेंडर. नाउ सी, सो कैप्सूल इज मेड अप ऑफ two hemisphere of each radius r is equal to 5/2 mm and a cylinder of same radius r is equal to 5/2 centimeter and height h is equal to 9 millimeter. Now the surface area of capsule is equal to surface area of cylinder plus 2 into surface area of hemisphere. Now surface area of cylinder is 2 pi rh, that is curved surface area, plus 2 into surface area of hemisphere is their curved surface area. स्टूडेंट जब तक टोटल ना लगाओ आप कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे. सो 2 into 2 pi r square. नाउ स्टूडेंट 2 pi r h, यहाँ पे r एंड h की वैल्यू रखिए. सो 2 into 22/7 into 5/2 into 9. 2 से 2 कैंसिल आउट एंड अगेन प्लस 2 ब्रैकेट 2 into 22/7 into 5/2 into 5/2. So student that will become 22/7. 9 into 5 is 45 plus स्टूडेंट यहां हमने 2 से दिस एक 2 को काटा और दूसरे 2 से सेकेंड 2 को काटा. सो दैट विल बिकम 22/7 into 5 into 5 25. नाउ 22/7 को कॉमन ले लीजिए. सो 45 प्लस 25 ब्रैकेट दैट विल इक्वल टू 22/7 into 17. 7 से 70 को काटिए दैट विल इक्वल टू 10 इक्वल टू 220 cm square. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया.